Hello everyone, very good evening to all of you. This is Anjali, your mentor for English और स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में जहां हम कर रहे हैं UGC नेट के इंग्लिश लिटरेचर की प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस. तो इट हैज़ ऑलरेडी बीन अराउंड 3 weeks स्टूडेंट्स जहां पर वी हैव सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रेंजिंग फ्रॉम योर 2019 का पेपर, 2018 का पेपर, 2017 का पेपर. तो आज भी हम कंटिन्यू करेंगे अपनी 2017 के पेपर को डिस्कस. आज का जो हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो थोड़ा लिमिटेड रहेगा. आपकी जनवरी मंथ में जो हुई थी एग्जामिनेशन उसको लेकर आज हम करने वाले हैं यहाँ पे डिस्कशन. आई होप ऑल ऑफ यू हैव ऑलरेडी ज्वाइन द सेशन और बिल्कुल रेडी हैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए. वी विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन वन बाई वन और उसके ऊपर जो भी एक्सप्लेनेशंस हम देख सकते हैं उसे समझने की ज़रूर कोशिश करेंगे. वंस अगेन आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू बिफोर एज वेल स्टूडेंट्स, मैं आज फिर से बोलती हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर जो है ना वो आपका ब्रह्मास्त्र है. इससे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, छोड़िएगा मत, वरना बाद में बहुत अफसोस होगा कि आप शायद 2-3 चैप्टर कम कर लीजिए लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर को जो है ना हर दिन आधा घंटा 45 मिनट आपको ज़रूर देना चाहिए टू हैव अ गुड एक्सरसाइज ऑन दैट. और इजीली आपको जो है ना अवेलेबल है. पिछले आई गेस अराउंड 7-8 साल के तो पेपर आप लोगों को बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे UGC नेट के, और आंसर्स भी जो है ना वो लगे रहते हैं. सो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर ऑल ऑफ यू टू हैव ऑन दिस. ओके, ऊपर से वैसे भी इंग्लिश लिटरेचर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाता है. तो यहाँ के लिए तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि भाई तुम जो है ना देखो इन क्वेश्चंस को, ताकि एक बाउंड्री सेट हो कि क्वेश्चंस एग्जाम में आते कैसे हैं और तुम किन चैप्टर्स को कर चुके हो, कौन सा चैप्टर तुम्हारा स्ट्रांग हो चुका है. सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी फिगर्ड आउट फ्रॉम योर सॉल्विंग दीज पेपर्स. ओके, तो ये लेकर चलती हूँ मैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ आप लोगों को. सो हियर वी आर. Which of the following poems by W.B. Yeats repudiates the sensual world in favor of the artifice of eternity? ओके, सो क्वेश्चन हमारा था कि इनमें से कौन सा पोएम है जिसमें रिपुडिएट कर रहे हैं. रिपुडिएट इज व्हेन यू आर नॉट इन फेवर ऑफ समथिंग. So the sensual world in favor of the artifice of eternity. So our right answer is going with option number C here, that is sailing to Byzantium. Now we will just have a look at few of the lines regarding this. एक बार मैं आपको जो है इसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन है एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं so that you know the in and out of this question. So sailing to Byzantium is one of the Yeats' most inspired works and one of the greatest poems of the 20th century. Like everybody is aware of this one. It is Yeats' definitive statement about the agony of the old age and the imaginative and spiritual work required to remain a vital individual. Even when the heart is fastened to a dying animal, the body, Yeats' solution is to leave the country of the young and travel to Byzantium, where the sages in the city's famous gold mosaics, okay, could become the singing masters of his soul. So what does Yeats hope in that scenario? So he hoped that the sages will appear in fire and take him away from his body into an existence outside time, where like a great work of art he could exist, the artifice of eternity. In the astonishing final stanza of the poem, he declares that once he is out of his body, he will never again appear in the form of a natural thing again. Rather, he will become a golden bird sitting on a golden tree,
सिंगिंग ऑफ द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। तो ये उनकी इमेजिनेशन थी इस पोएम को लेकर, जो चीज़ें यहाँ डिस्क्राइब्ड है। इट वॉज द थिंग विच वॉज mentioned in that poem, इनका जो वर्क था सेलिंग टू बाइजेंटियम। ओके, तो मैं लेके चलती हूँ आपको दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एवरीबडी हैव अ गुड लुक। Which of the following characters in Moby Dick falls overboard and turns insane as a result? इसमें से किस में जो है ना ये ऐसा होता है? Like which of the following characters in Moby Dick? पिप, क्वीक्वेग, स्टारबक या ट्रस्टेको? कौन सा कैरेक्टर था जो मोबी डिक में दैट फॉल्स ओवरबोर्ड एंड टर्न्स इनसेन? द राइट आंसर इज गोइंग विथ ऑप्शन नंबर 1, दैट वाज पिप. So Pip, let's just understand what was this character about. So Pip was a young black boy. He was a character in Moby Dick who fills the role of a cabin boy or the jester on the pickboard. So Pip has a minimal role in the beginning of the narrative, but becomes important when he goes insane after being left to drift alone in the sea for some time. So that's why I think being insane was one of the highlight of this character. शुरुआत में उतना important नहीं था, but when that whole twist and turn happened, इस इवेंट पे जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा फेमस हुआ या इट ग्रैब्ड द रीडर्स अटेंशन. ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन इज देयर ऑन योर स्क्रीन एवरीबडी. Which of the following poems by Seamus Heaney is dedicated to the Irish poet Paul Muldoon? The Loaning, The Sandpit, A Migration या Virgin? So for this the right answer is going with option number 4, that is Virgin. और इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं. So Muldoon doesn't only produce responses to the medieval in reaction to the Heaney. So Imram from Muldoon's previous volume Why Brownlee Left has depths to the medieval Irish Imran Correg Meili Duin. So it was from Voyage of Muldoon via Tennyson. And as Henry notes like Yeats, there may be another response to Heaney's versions of the medieval in Muldoon's brief poem. That brief poem was The Briefcase. A poem, it was dedicated to Heaney and a matching pair of Heaney's Virgin. So it was actually dedicated to Muldoon. Next question on your screen everybody. Have a look. ओके, तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है इन कैंटरबरी टेल्स हु हैज़ रेड फेस फुल ऑफ सोर्स. सो द राइट आंसर फॉर दिस इज गोइंग फॉर ऑप्शन नंबर 1, द समनर. तो इन कैंटरबरी टेल्स द समनर हैड अ रेड फेस फुल ऑफ सोर्स. क्यों ऐसा क्यों हुआ था? That character ate onions and drank too much. He took bribes,
carried a cake around like a shield and wore a garland of flowers on his head. So that was a like brief physical description about the character, the summoner. The pace of speech is called what? स्पीच का जो पेस होता है उसे क्या बोलते हैं? ये एक लिटरेरी डिवाइस के अंदर भी आपका कवर होगा स्टूडेंट्स. यस. सो द पेस ऑफ स्पीच इज कॉल्ड व्हाट? सिलेबल, लाउडनेस, टेम्पो या पिच, क्या बोलते हैं हम लोग उसको? एनी आइडिया? सिलेबल, लाउडनेस, टेम्पो या पिच. मुझे लगता है यहाँ पे आंसर जो है ना, अगर आप थोड़ा एलिमिनेट कर पाए तो भी मिल जाएगा, है ना. सिलेबल हो नहीं सकता था. पिच अगेन जो आपका हाई लो होता है उसकी हम बात कर रहे हैं. सो हमारा आंसर जा रहा था ऑप्शन नंबर सी के साथ. सो विल जस्ट हैव अ क्विक डिस्कशन. क्या होता है? तो पेस जो होता है, पेस यानी जो स्पीड होती है, तो दैट इज कॉल्ड टेम्पो. और दैट कैन बी वेरी टू आवर मूड. आई थिंक दिस हैपन्स इन योर डे टू डे लाइफ टू स्टूडेंट्स. लाइक when you're very happy, when you're excited, your pace is like uncontrollable, your pace goes like a bit high. But when you talk about, or let's say when you're very bored about something, when you're talking about some mundane topic, so the kind of pace which you use over there is a bit slow. You're not seem to be interested in that, right? तो ये वेरी करता है हमारे मूड के साथ. तो फास्ट स्पीच कैन कन्वे अर्जेंसी, राइट. स्लोअर स्पीच कैन बी यूज फॉर एम्फोसिस, जैसा कि डिफरेंट जो पेसेस हैं ना वो अलग अलग चीज़ें बता सकती हैं. वेरीइंग द टेम्पो कैन ऑल्सो बी यूज फॉर इफेक्ट इन पब्लिक स्पीकिंग, राइट. ऑफन accompanying changes in loudness. When reading stories to children, we can vary the tempo and loudness to reinforce the meaning of the words. Exact बात है. Then carefully, tenderly, gently, he crept up the trunk to the nest where the little egg slept. तो जो शब्द आप चुनते हैं ना to describe one incident, to describe one story, तो वो शब्द से भी जो है ना it helps you to vary your pitch. So that's what we understood here कि ये जो पेस आता है ये क्या होता है? ये टेम्पो होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी आसान सवाल होते हैं इस तरह के. आपको बस मैच करना है कि जो ऑथर है उनका वर्क क्या था. सो यू जस्ट हैव टू गो विद द ऑथर एंड टाइटल. ऑथर एंड टाइटल अच्छे से पढ़ो, लाइक नो नीड टू बी इन अ हरी. ओके. तो everybody read the questions carefully. क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि पहला जो यहाँ पर सेट है वो है अपना टाइटल का, जैसे कि सेक्सुअल पॉलिटिक्स, अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन,
Thinking About Women, The Laugh of the Medusa. So now we have the four authors here as well, जैसे Mary Ellman, Elaine Showalter, we have Helen Sixtus और Kate Millett. तो हमारा आंसर जो जा रहा है वो है बी के साथ. ऑप्शन नंबर बी का मतलब है ए के साथ वी आर गोइंग लाइक 4, यानी कि सेक्सुअल पॉलिटिक्स जो है वो लिखा गया है केट मिलेट के द्वारा. देन जो लिटरेचर ऑफ देयर ओन की हम बात कर रहे हैं, दैट इज रिटन बाय ऑप्शन सॉरी यस Elaine Showalter. Then Thinking About Women is going with Mary Ellman, और The Laugh of Medusa is going with Helen Sixtus. तो ये हमारा करेक्ट आंसर था. आई होप आपने ये मैच कर दिया होगा. देखो, इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है ना, अगर तुमको सारे ऑप्शंस नहीं भी पता है तो एटलीस्ट यू कैन मैच विथ 1 और 2 जो आपको पता है, तो वहाँ से भी जो है ना लिंक आप बिठा सकते हो स्टूडेंट्स. फाइन, ठीक है. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा. द राइट आंसर फॉर दिस वन इज गोइंग विथ ऑप्शन नंबर डी, क्रीमियन वॉर. तो आपको पूछा गया था कि कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट जो है इसको डिस्क्राइब कर रहा है. ये जो टेनिसन की पोएम थी, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, तो इसमें डिस्क्राइब किया गया है क्रीमियन वॉर को. अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग. So the question here says, Northrop Frye's influential work Anatomy of Criticism includes, as the subtitle indicates, 4 essays. So which one of them is not one of them? तो वो 4 essays में से ये कौन सा नहीं है? So the answer is option number B, typological criticism, that is theory of types. Next देखेंगे.
Okay. The right answer for this one is going with option number third, Rembrandt. So, in Robert Browning's Andrea del Sarto, which of the following painters does Andrea not compare himself with? So, that was Rembrandt. So, इस poem में Andrea actually measured himself with whom? So, Andrea measures himself against the generally recognized triumvirate of great Renaissance artists, जैसे कि लियोनार्डो डा विंची. तो इनसे उन्होंने खुद को कंपेयर किया था. मिशेलांजेलो ब्यूनराती और राफेलो सांजिया, जिसको आप रफेल के नाम से भी जानते हैं. Here comes the next question on your screen. So in Jonathan Swift's Gulliver's Travels, Gulliver refers to William Dampier. So the famous writer of two voyages as, किस तरीके से उसको रेफर किया गया था? Master, brother, cousin या uncle. I think this is one of the easiest question of this whole set. It was cousin. तो हुआ क्या था कि उन्होंने रेफर किया था विलियम डैम्पियर को अपने कज़न की तरह. Commentators who cite correspondence between Gulliver's Travels and William Dampier's new voyage round the world have supported their argument with the evidence that Swift owned a copy of the voyage. Swift even has Gulliver refer to his dozen Dampier and therefore claim a lineage to his actual voyager. Indeed, the central premise of Gulliver as an exotic outsider introduced into even stranger societies may have been inspired by Dampier's initiative when in 1691 he brought a tattooed native from the Philippines island of Mindanao to England of exhibition. Who among the following is not a character in Pride and Prejudice? कौन नहीं था? तो नाम पढ़िए, आई गेस पढ़ करके ही आपको समझ में आ जाएगा. तो आंसर हमारा जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ. मिस बेट्स वॉज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस. मिस्टर डार्सी, मिस बिंगली एंड मिस्टर कॉलिन्स आर द कैरेक्टर्स इन प्राइड एंड प्रेजुडिस. As Jane continues to recuperate at Netherfield, Elizabeth again spends the evening in the drawing room with the Bingleys. Hurts,
and Mr. Darcy. The visitor is William Collins, Mr. Bennet's cousin, and the man who will inherit Longbourn after Mr. Bennet dies. So it was the ऑप्शन नंबर सी मिस बेट्स जो प्राइड एंड प्रेजुडिस के कैरेक्टर में नहीं थे. ओके, नेक्स्ट वन ऑन योर स्क्रीन एवरीबडी. All the world's a stage, and all the men and women merely players, occurs in Shakespeare's As You Like It. Which character says this line? So that character's name is Jax. The next question is again a very interesting one. Which of the following rivers are mentioned in Andrew Marvell's poem To His Coy Mistress? वो रिवर के नाम आपको बताने हैं. अगर एक भी रिवर का नाम पता है तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी ए इजी टास्क. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गैंगेज एंड हम्बर. So in Andrew Marvell's poem To His Coy Mistress, he selects two rivers, India's Ganges, which is sacred to the Hindu religion and thought of as the earthly embodiment of a goddess, right? जैसा हम उनको मानते हैं. And England's Humber, which flows past Marvell's hometown of Hull. So वो आपको रिवर के नाम भी मालूम चल गए और उन्होंने क्यों सेलेक्ट किया था. आई होप यू गॉट द आंसर. नेक्स्ट वन. So the question's answer is going with option number A, plus the truth, the whole truth and nothing but the truth. The above is an example of plus. तो आगे चलेंगे, but before that would like to draw your attention towards our very important feature which has come along with Testbook SuperCoaching. If you students like are stuck like from where to start or from where to revamp my प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जामिनेशन, बहुत वास्ट है तो किन किन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, किन किन चीज़ों को छोड़ना चाहिए. इफ़ यू वॉन्ट like simplified guidance, so I think SuperCoaching has come up with a very important solution for all of you. With one single subscription, you people can unlock 8+ video courses by your super teachers.
800 plus mock tests. I think these mock tests are the major attraction of this whole course, because this is going to give you an idea, the real time practice sessions of your exam. Timer के साथ जब आप practice करते हैं तो accuracy, the stress which you feel in your examination quite similar होता है. 1000 से भी ज़्यादा study notes, because we know that how important your notes are when it comes to literature as well as other subjects in your UGC net. So for that you don't have to put an extra effort, आपको बनाना नहीं है. You will be getting that, as well as 900 से भी ज़्यादा live classes जो आपके experts, आपके super teachers यहाँ पर ले रहे होंगे. जैसे you have Mohammad Azam sir, then we have Minakshi ma'am, Zenith Education along with Lakshya Academy. So when we talk about the pricing of this course, that is 15,399 as of now on our Testbook SuperCoaching. But along with this coupon code जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये प्राइसिंग 35% जो है ना वो कम हो जाएगी. सो वंस यू मेड अप योर माइंड दैट यू हैव टू इनरोल इन दिस वन, तो कूपन कोड का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा. आई होप दिस विल हेल्प यू इन एज अ फाइनेंशियल एड. ओके, with that we will just move towards the next one. Have a look everybody. Which of the following is not a part of W.H. Auden's poem in memory of W.B. Yeats? तो आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, मेमोरी स्कैटरिंग लाइक द बीट्स. तो ये जो मेमोरी स्कैटर करते बीट्स की तरह, ये जो है ना इसके अंदर नहीं था. अ लॉट ऑफ पीपल विल थिंक कि चलो ठीक है मेमोरी है तो विल जस्ट गो फॉर दैट आंसर, बट दैट्स नॉट द केस. सो W.H. Auden was admired for his unsurpassed technical virtuosity and ability to write poems in nearly every imaginable verse form. तो भाई ये काफ़ी बढ़िया टैलेंट था उनका. His incorporation of popular culture, current events and vernacular speech in his work, and also for the vast range of his intellect which drew easily from an extraordinary variety of literatures, art forms, social and political theories and scientific and technical information. ठीक है. So here comes the next question on your screen. Okay. सो क्वेश्चन का आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी रिचर्ड क्रैशव. सो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ स्टेप्स टू द टेम्पल? तो हमारा आंसर गया है रिचर्ड क्रैशव के साथ. सो इन 1646 द एडिशन ऑफ रिचर्ड क्रैशव स्टेप्स टू द टेम्पल, apparently edited by the anonymous author of the preface, also includes a section of secular poems called the Delights of the Muses, equivalent to another volume. तो ये इंफॉर्मेशन थी इसके बारे में. ठीक है.
Students, I will keep the session till here itself. कुछ अराउंड 18 क्वेश्चंस हम लोगों ने आज की सेशन में किया है. आई होप दिस विल गिव यू एन आइडिया. आज के लिए इतना ही रखते हैं एंड आई होप दी सेशंस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर विल गिव यू एन आइडिया व्हाट ऑल थिंग्स टू रीड, व्हाट ऑल थिंग्स नॉट टू रीड. आप याद रखिएगा, जैसे ही आप किसी सब्सक्रिप्शन को अनलॉक करते हैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो है ना रिसोर्सेज मिल रही होती है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ. याद रखिएगा, दिस इज़ माई कूपन कोड अंजलि. जैसे ही आप इसे सब्सक्रिप्शन को अनलॉक करने के लिए यूज़ करेंगे, यू विल गेट इमीडिएटली 35% ऑफ ऑन योर परचेज. ओके, सो आज के लिए इतना ही. हैव अ ग्रेट वीकेंड टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू एवरीवन वंस अगेन.